Yeah, Samreen ma'am, you can. Yes, ma'am, you can start. Assalamu alaikum and a very good morning to one and all. I am Professor Samreen Khan, Assistant Professor on behalf of Anjuman-I-Islam Kalsekar Technical Campus. Extend my warm welcome to our Director of ARKTC, ARKP, Dr. Abdul Razak Honotogi, Principal of ARKP, Mr. Ramzan Khatik, today's resource person, Professor MZ Quadri, our participants from various schools and colleges to this sensitizing program on New Education Policy 2020. To start our day, as per the tradition of Anjuman Islam, I would like to request Professor Banda Nawaz sir to recite verses from Holy Quran. Professor Thank you, Banda ma'am. Nawaz sir, Thank over you. to you. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاك الله ma'am. Thank you, sir. Anjuman-I-Islam Abdul Razak Polytechnic is headed by Mr. Ramzan Khatik. I take this opportunity to invite sir to address the participants. Over to you, Ramzan sir. Good evening and Assalamu alaikum to all the dignitaries on the panel, respected. You just unmute your video. Respected dignitaries on the panel, our respected Director Dr. Abdul Razak sir, today's resource person Professor MZ Kadri sir, and the organizer of today's programs, Banda Nawaz Kotial sir and Muhammad Maruf, and the team under working for Unnat Bharat Abhiyan. The today's program basically is on the awareness and sensitization of the program on national education policy and overview. Definitely all the stakeholders who matters regarding the education policies, they will get benefit out of these programs, and everybody is literally running behind to understand these new education policies, making different kind of strategies to execute in an effective manner so that all the stakeholders can take the benefit out of it. First of all, I would like to congratulate this entire team for organizing this program under the Unnat Bharat Abhiyan, and this project is basically with the MHRD government of India, and definitely all the students participants will get benefit out of it. I hope from this resource person today, we all the stakeholders who are participating to this program will get the benefit out of it. Thanks to very much, and over to you, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir. So I want you all to meet one of the finest and most dynamic educationists of Anjuman-I-Islam, Dr. Abdul Razak Honotogi, who is currently acting as Director of Anjuman-I-Islam Kalsekar Technical Campus. Sir is a civil engineering graduate and did his master's from IIT Roorkee and PhD from IIT Bombay. Sir has more than 30 years of professional experience in the field of engineering education. While working as assistant professor of engineering, civil engineering at MS Abu Siddiq College of Engineering, Sir received the Best Teacher Award amongst various colleges of Anjuman-I-Islam for the year 98-99. Sir continued progression in his teaching and got promoted as principal of MS Abu Siddiq Polytechnic, Mumbai. During his tenure, Abu Siddiq Polytechnic was adjudged as the best polytechnic of Maharashtra state for the year 99-2000. 2000. Also, the institute was cited as role model polytechnic during Sir's tenure. Sir is devoted researcher also and has published numerous articles in international journals and has received the Outstanding Research Paper Award in the International Engineering and Technology Education Conference held at Taylor's University, Malaysia. And the list is lengthy.
I think rather than listening about Director Sir, let me get you directly connected to Sir himself, who would make you aware about who we are and who we do. Over to you, Director Sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you, Professor Samrin. Rohandas, am I audible? Yes, sir. Okay. My friend, Professor Ramzan Khatik, Principal of Abdul Razak Kalsekar Polytechnic, today's resource person who will be giving the complete overview of the most coveted, the policy which the Government of India has introduced, National Education Policy 2020, Quadri and the team of Unnat Bharat Abhiyan, organizers and all participants. Let me welcome you to this webinar, which has been thought at a right time. Rather, these kind of awareness programs are a must, because it is not just awareness, creating awareness on this policy document, but also the way how it gets implemented. And we all, being teachers and whoever taking part in these kind of programs, we need to be a part of implementation of this policy. So therefore, what is most important is what is all this about? Why this policy came into picture? Why Government of India thought of this policy? We all know every country has got its own policy for education, both at school and higher education, and it all depends on their context, their resources. So these well-defined and futuristic education policies are essential for a country at both school and college levels. Due to this reason, that the education system leads to economic and social progress. As I said, different countries adopt different education systems by considering the tradition and culture, and also adopt different stages during its life cycle, both at school and higher education levels, to make ultimately the education system more effective. So this is what the crux of this policy is. So therefore, recently Government of India announced its new policy, which is popularly called as NEP 2020, which is essentially based on the recommendations made by an expert committee headed by none other than a great personality of today's time, Dr. Kasturi Rangan, who was the former chairman of Indian Space Research Organization. We call it as ISRO. So that kind of person headed this committee, and a lot of efforts, consistent efforts, collecting huge feedback from more than 2.5 lakh feedback elements were analyzed, and it was a hell of a task. And finally, it got culminated into a document called National Education Policy 2020. So therefore, in this particular webinar, we all participants, whoever attending, we will not get the complete picture of this policy. It is only an effort to give you the overview. It is like a trailer. So this trailer, through this webinar, is only to highlight what all those things this new education policy has got in comparison to the existing policy. So which has been in our system for the last more than 34 years. So compared to that old policy, what these changes which have been taken care by the Government of India in this policy. And ultimately, we all should be geared up, and particularly my suggestion is to propose time and again the effective implementation strategies to make this policy more objective and more effective.
So this is how we need to proceed with. So therefore, there are certain, dimensions. I invite all of you to read that 66-page document, which is there in public domain. And that document should be read by each and every person who is interested in the field of education. Particularly, it should be mandatory for teachers. So teachers are expected to read that 66 pages document, and it covers beautifully. There are essentially 4 parts, school education, higher education, the key features and implementation strategy, the special things, all these kind of things will give you some insight what exactly the roadmap for Indian education system is. So it deals with like preparation for schooling at elementary schooling level. There is a new model introduced, and it also tells about school infrastructure and resources required for implementing this policy. And more focus is given on the holistic development of the student. Now the student is not confined to getting specialized in one particular area. So holistic development in the sense the student, the resources, the human resources should become multidisciplinary. So the multi-skill development approach is there. Therefore, one of the component is related to holistic development of the student. And another beauty of this policy is its inclusive nature. So the inclusivity is taken care, whether it is related to gender inclusion, specially challenged or gifted children, maybe for adult education, or those people who are working but they do not have any kind of authentic certification, though they have got skills. All those inclusive approach is also a part of this policy. And some indicators related to the mechanism for assessing our holistic development. Then another important component which has been put into this policy document is a very innovative way of curriculum and pedagogical framework. How to develop, what should be our curriculum mechanism, how the pedagogy should be evolved. That is also one of the important aspects which this policy deals with. And the central pillar of this policy implementation is the teacher. So therefore, teacher recruitment, teacher education is also a must, because the policy starts get implemented from the schooling, right from school. So therefore, the teachers at school level should be well versed with what is expected at various levels. So therefore, teacher education is also particularly taken care, particularly for integrated B.Ed degree program kind of thing. Then to make this policy working for at all level, the role of government, various departments, various bodies, various statutory organizations. Normally what happens, because of multi-statutory authorities, multi-bosses, so people do not get more focus on implementation. So the best thing in this policy is an indicator for not having multiple authorities, single window system kind of thing. That is also put into this policy. So likewise, to me, when I have gone through this policy document, and we had such number of webinars even at our Anjuman-I-Islam level, and at school level, we had a brainstorming, and we gave certain our feedback, especially for implementation of this policy at school level. And there are many programs even at higher education level organized by AICT that also we have attended. And now me or you all as a part of higher education, we must be thinking the innovative ways of implementation of this particular policy, right? So that is how we should look at it. It is not just merely a document and we have this webinar and we get to know certain things and just forget. It is not like that. So I can tell you very confidently that this policy, the new policy, is more vibrant, more dynamic, and it gives you
all levers for innovation. Therefore, the participants who are attending here should give a clear focus on getting to know about the overview of entire policy, which will be provided by today's resource person, Mr. Zia Kadri Sahab. And I welcome today's resource person on my personal behalf and also on behalf of Anjuman-I-Islam's Kalsekar Technical Campus, Kalsekar Polytechnic, and also entire Anjuman-I-Islam. And you know, Anjuman-I-Islam, it's not any ordinary organization. It has got 97 institutions, 110,000 students, and standing tall for the last 147 years. So it is founded by great, philosophers, great thinkers of that time. And our founder was none other than late Mr. Badruddin Tayyibzi. He was highly educated, first Indian judge of Bombay High Court. So those kind of freedom fighters established the Anjuman-I-Islam. So therefore, those freedom fighters were also part of the first education policy, which was drafted at that time under the leadership of then first education minister Maulana Abul Kalam Azad. So that time the input were given by our Anjuman-I-Islam to draft that first education policy also. So Anjuman-I-Islam took the lead. And also today, our current president of Anjuman-I-Islam, Dr. Zahir Kazi, he was invited by this expert committee who provided this national education policy, headed by Dr. Kasturi Rangan. So that committee invited our president to take part in brainstorming and provide some inputs. So I'm very happy to tell all of you that around 120 inputs gathered to finalize that document. Six of the inputs given by our Anjuman-I-Islam through Dr. Zahir Kazi were accepted as it is, and they have become part of this national education policy document. So one of the, I don't tell you all those, but when you read, you'll come to know. But the most important input given by our Anjuman-I-Islam was on mentoring mechanism, mentorship mechanism, how mentorship is most important in holistic development of students. So that input is also given by Anjuman-I-Islam out of another 6. So this way, Anjuman-I-Islam, when it started its first education policy for the country, that time contributed, and even today it contributed. And therefore, we have got some ambitious plans over the time to see that not only creating awareness, but also telling you how best we implement this policy for the benefit of all educators and for the benefit of all teachers, so that they will become more serious about this policy. And ultimately, see, there's something called academic credit bank, So all what we do, what kind of skills we develop, that all goes into digital bank, and there, it remains, and anybody can enter anytime. And there is a multiple entry exit system provided by this policy. So all those opportunities are there in future to grab, and the educational institutions like Kalsekar Technical Campus and all its stakeholders should be taking the best use of this policy to make it happening in reality, in its letter and spirit. And towards that, I welcome your attention, and I also invite your attention to pay focus to the presentation of our today's resource person, Mr. Quadri. And with this welcome note, I leave the forum to the resource person and to the organizers. Thank you very much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Thank you, sir. To move forward, I would like to invite our final year student from ARKP Mechanical Department, Ms. Sahima Begum, to introduce today's speaker. Over to you, Sahima. Assalamu alaikum. Good evening to all. Myself, Sahima Begum from Mechanical Final Year. It's my tremendous honor to introduce our speaker for today's program. We are indeed privileged to have Professor MZ Quadri as our speaker for today. He has done his MTech in Mechanical Engineering, MBA in Quality Engineering. He is also the member for various bodies such as
IIE Mumbai, IIMM Mumbai, ISTE New Delhi, QCI New Delhi, NSCI New Delhi. He is the working committee member of Quality Circle Forum of India, National Institution for Quality and Reliability, Chennai. He is the soft skill expert on National Instruction Media Institute, Chennai. He is the advisor in Indian Engineering Institutions of India. He has more than 20 years of teaching experience, and also he is in post of principal and in charge training placement officer. It's a proud privilege to have Professor MZ Quadri as our speaker for today's webinar. Thank you, Sahima. So without wasting much time, I would like to request Professor Zia Quadri to begin the session. Also, students can write their questions in comment section. Over to you, sir. Good morning, good evening, all of you. Okay. Are you getting me, sir? Am I audible? Yeah. Yes, yes, you are audible. You can go ahead, sir. Okay, okay. Thank you so much, Dr. Abdul Razzaq Saab, a IITian and a very nice keynote speaker. And I come to know what is mean by education policy, because my expertise in quality engineering, lean manufacturing, Six Sigma. This is a very new topic for me when Mr. Professor Maruf told me to give the webinar on national policy in education. So being a part of this very great organization, it is really my honor and privilege to be part of this webinar, sir. And I come to know the policy, what is mean by education policy and how much contributions given by your institutions. And Dr. Abdul Razzaq साहब, मैंने आपसे सीखा हूँ, मुझे तो ये पॉलिसी के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा इसके बारे में. आपने जो 66 पेज के बारे में जो जिक्र किया आपने, तो सर मैं रियली इसके पूरे इसके जो पॉलिसी के जो आपने जो कहा कि इसकी जो ब्यूटी है, इसका जो बहुत अच्छा यानी मोर डायनामिक है, मोर वाइब्रेंट है, मैं इस पॉलिसी को और डिटेल में पढ़ूंगा सर और आगे इसके बारे में जाऊंगा. बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ इस वेबिनार में, आपने मुझे इनवाइट किया, इतना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक पार्ट बना. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑनर एंड प्राइविलेज टू बी पार्ट ऑफ दिस नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एजुकेशन. एजुकेशन इज व्हाट? एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज अ प्रोसेस. एजुकेशन एंड स्किल्स आर द ड्राइविंग फोर्स फॉर द नेशन. स्किल ड्राइव द नेशन. स्किल देश को ड्राइव करते हैं. और ये एजुकेशन जो पॉलिसी जो थी, हमने अभी देखा कि potential, developing an equitable and just society and promoting the national development. So education is a process of learning and knowledge, skill and value-based habits. क्यों हमको सीखना है? Why we want to learn? If you learn more, definitely you earn more. अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो definitely आप earning and learning जो है very closely यानी कि उससे attach है. Learn and earn. The difference between L. If you learn more, definitely you earn more. एजुकेशन का इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि क्वालिटी ऑफ नेशन इज असेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ देयर सिटीजन. क्वालिटी ऑफ देयर सिटीजंस आर असेस्ड बाय क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज असेस्ड बाय क्वालिटी ऑफ देयर एबिलिटी. सो टू इंक्रीज द एबिलिटी, सो रिफॉर्म इन एजुकेशन बहुत आवश्यक है. हमने अभी देखा कि भी एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स आए थे, तो एजुकेशन के जो रिफॉर्म से जो फर्स्ट रिफॉर्म एजुकेशन में आया था 1968 में, ये जो रिफॉर्म्स था, अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई जो एजुकेशन के जो रिफॉर्म्स के क्यों कहाँ पे आए थे, तो ये एजुकेशन के रिफॉर्म्स जो पहला रिफॉर्म आया था 1968 में, यहाँ पे जो एम्फेसाइज किया गया था एजुकेटिंग द रूरल एंड अर्बन. हमको जब आजाद हुए, हमारा भारत जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में हमने सबसे पहले जो हमारा फोकस था कि हमको लोगों को सिखाना था, ये हमारी पहली एजुकेशन रिफॉर्म जो हमारी पॉलिसी आई थी. बाद में सेकंड पॉलिसी आई 1986 में. यहाँ के जो इश्यूज थे, ये पॉलिसी के जो इश्यू थे, ये थे असेस और इक्वलिटी. हमको हर कास्ट के, हर क्रीड के, हर सोसाइटी के, हमको हर जेंडर्स के लोगों को उसमें इनवाइट करना था, उनको उसमें शामिल करना था. पहले तो जब हम आजाद हुए 68 में,
तो हमको एजुकेशन देना था, लेकिन 86 के जो हमारे इश्यू थे वो इश्यू थे हमारे कि हम एजुकेशन को किस तरह असेस कर सकते हैं, सर इक्वलिटी एजुकेशन। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर आप पीपीटी शेयर कर रहे हैं सर? आपका स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रहा है सर। हेलो, हाँ सर, मारूफ सर, स्क्रीन नहीं आ रहा क्या? हाँ स्क्रीन नहीं आ रहा। हाँ सर, हो रहा है क्या शेयरिंग? हेलो, नहीं नहीं सर, नहीं दिख रहा है सर। ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट। या सर, हेलो, हाँ हाँ सर, अभी स्टार्ट हो रहा है सर, एक सेकेंड। हो रहा है ना? ओके ओके हाँ हाँ। ओके सर, यस राइट, सर, यस सर, यस, थैंक यू सर। ओके। सो द क्वालिटी, जो हमारा सेकंड जो हमारा रिफॉर्म आया था वो 1968 में आया था, इशू रिलेटेड टू एक्सेस एंड इक्वलिटी। थर्ड रिफॉर्म आया हमारा 2020, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थर्ड हमारे रिफॉर्म में जो दिया गया कि भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ नेशन इज असेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ देयर सिटीजन एंड क्वालिटी ऑफ सिटीजन असेस्ड बाय क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज असेस्ड बाय क्वालिटी ऑफ देयर एबिलिटी। है, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट था हमारे लिए? क्योंकि 19वीं जो सदी थी, 19th सेंचुरी वाज द मसल्स पावर। उस पीरियड में क्या हुआ करता था, जिसके पास में ताकत हुआ करती थी, जिसके पास में मसल्स पावर है, वो दुनिया पे उसने राज किया। 20वीं सदी जो आई, इट इज ए सेंचुरी ऑफ द मनी पावर। 21 सेंचुरी इज द नॉलेज पावर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई आज अगर हमको आगे बढ़ना है, हमको सुपर पावर बढ़ना है, हमें हमारे मुल्क में, हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी लाना है, हमारे देश में हमको अगर सब एक स्टेबिलिटी लाना है, तो हमको नॉलेज के बारे में, नॉलेज पावर पे हमको फोकस करना पड़ेगा। तो क्वालिटी एजुकेशन, ये जो थर्ड पॉलिसी है, इसमें क्वालिटी एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। इस पॉलिसी के जो कुछ पिलर्स, जो इसमें कहा गया कि इसके प्रिंसिपल क्या थे, इसमें फाउंडेशन पिलर क्या था, इसमें असेस, इक्विलिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन, ये बहुत ज्यादा इसमें फोकस, यहाँ पे फोकस किया गया। इसमें जो चीजें थी अभी तक की, हम जो एजुकेशन जो था, एजुकेशन की जो हमारी थीम थी अभी तक के, ये चेंज हो गई। पहले हम एजुकेशन से हमारा लर्निंग हुआ, एग्जामिनेशन से असेसमेंट हुआ, थ्योरी जो पढ़ते थे प्रोफेशनल नॉलेज बना, जो हम प्रैक्टिकल करते थे प्रोफेशनल स्किल्स बने। तो ये जो चीजें हमारे को, जो आज हमारे कंट्री के लिए, जो अभी हमारे जो डायरेक्टर साहब ने जो अभी जो कहा कि आपका जो कंट्री जो हुआ करते हैं, जहाँ पे उनका जो डिफरेंट कंट्री जो अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, एजुकेशन नीड्स टू चेंज। अब यहाँ पे दोनों पॉलिसी जो थी, तो क्या ये दोनों पॉलिसी जो हमने अभी तक के जो 1968 की देखा और 86 की पॉलिसी देखा, तो क्या ये पॉलिसी सही नहीं थी? अगर एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि भाई क्या पॉलिसी जो हमने पहली जो पॉलिसी देखा है, 1968 की पॉलिसी देखा है हमने, तो ये पॉलिसी क्या थी? तो ये पॉलिसी उस समय के हिसाब से सही थी। जो हमने 3 पॉलिसी देखा है, उस पीरियड में हमारा, जब भारत, हमारा देश आजाद हुआ, उस पीरियड में लोगों को एजुकेशन की आवश्यकता थी, उनको लिखना पढ़ना बेसिक हमको सिखाना पड़ता था। 86 से 92 में एक छोटा बदलाव आया एजुकेशन में, लेकिन हम रिफॉर्म्स नहीं कह सकते हैं। लेकिन थर्ड पॉलिसी जो आया, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आया, क्योंकि हम जानते हैं वी आर मूविंग टुवर्ड एजुकेशन 4.0, आवर इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड द 4.0 इंडस्ट्री। यहाँ पे चीजें बदल रही है, यहाँ पे हर चीज चेंज हो रही है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, आवश्यकता है। तो अब हमने ये देखा कि भाई प्रीवियस पॉलिसी में क्या था। प्रीवियस पॉलिसी में 10+2+3 एक सिस्टम था, जहां पे एक स्ट्रीम हुआ करती थी, और यहाँ पे जो अभी हमारे जो डायरेक्टर साहब ने जो भी बताया कि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट जो था, उस पॉलिसी में वहां पे नहीं था। न्यू जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसमें जो यहाँ पे जो चेंज आया है,
यहाँ पे आपको जो था कि यहाँ पे आपके एक आप जब 4th तक के जाते थे वहां पे आपका एग्जाम होता था, फिर आप 10th में आपका एग्जाम होता था, फिर आप 12th पास करते थे और 10+2+3 यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होता था और आपको एक स्ट्रीम यहाँ पे मिलता था। लेकिन अभी जो ये हम जो पॉलिसी जो अभी देख रहे हैं, तो यहाँ पे 5+3+3+4 5+3+3+4 मीन्स ये स्टूडेंट के ईयर्स है जो वो एजुकेशन लेगा। 5 जो है ये उसका पहला जो फाउंडेशन स्टेज है। इस स्टेज में अभी जो ये पॉलिसी जब आई तो पॉलिसी में एक आर्टिकल आया था, उसमें एक कार्टून आया था, उसमें कार्टून में एक पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में लेके जा रहे हैं और वो बच्चा नहीं जा रहा, उसके पेरेंट्स उसको खींच रहे हैं। तो एक बच्चा कहता है कि इसको कहाँ लेके जा रहा है, तो इसको एजुकेशन के लिए इसको स्कूल में लेके जा रहा है। बच्चों में जो डर था, जो डायरेक्टर जो थे इसरो के, जो डायरेक्टर जो अभी कहा सर ने कहा कि जो इसके चेयरपर्सन कस्तूरी रंजन साहब जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने और उनके मेंबरों ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे में जो ड्रॉप आउट है, फियर ऑफ एजुकेशन है। बच्चा एजुकेशन से डरता है, क्लास में जाता है, क्लास के उसके कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको यूनिफॉर्म रहता है, किताबें रहती है। ये सभी चीजें इस पॉलिसी में जो फर्स्ट स्टेज में, जो पहला स्टेज है 5 का स्टेज जो है, इसमें फोकस ऑन लैंग्वेज एंड मैनर्स एंड प्ले बेस्ड लर्निंग है। ये जो पहला स्टेज इस पॉलिसी में है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में नहीं था। 3 इयर्स का बच्चा प्ले करेगा, इट इज प्ले बेस्ड। स्कूल में जाने का जो डर है, वो डर यहाँ पे उसका निकल जाएगा। उसके बाद में वो 2 साल के जो रहेंगे, 2 इयर्स रहेंगे, he is only a nominal in classroom and there is no examination. Fear of examination is eliminated in order to decrease the dropout of the student in the first stage of the policy. In the second stage of the policy, यहाँ पे ये preparatory stage है. In this activity based learning, focus on the language, numeracy and he will get in the class 3 to 5. Now in this stage the examination will start. पहले स्टेज में बच्चों को 3 साल जो है, जो बच्चा चाहता था, खेलना चाहता था बाहर, उसको एक केजी का बच्चा है, लोअर केजी का बच्चा है, अपर केजी का बच्चा है, उसको ड्रेस होता था, उसको किताबों का बोझ होता था, उसको एक स्कूल में जाना पड़ता था, उसका जो डर था वो गवर्नमेंट ने वहां से हटा दिया कि पहले स्टेज में फाउंडेशन स्टेज में देयर इज नो एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मींस अ बोरिंग टॉपिक फॉर स्टूडेंट। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए एक डर होता है, एक फियर होता है। सेकंड स्टेज में उन्होंने क्या कहा कि भाई यहां से बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उसको बच्चों को फोकस करो कि भाई आप लैंग्वेज पे क्लासरूम एक्टिविटीज में करो। यहां से उन्होंने एग्जाम को स्टार्ट किया सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में जो दिया, यहाँ पे बच्चा पहले स्टेज में 3 साल तो वो खेलेगा और 2 साल फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे वो बच्चा पास हो जाएगा। जब सेकंड स्टेज में जाएगा तो वो बच्चा तीसरी से लेके 2 साल यहाँ पे 3 साल स्टडी करेगा, 3 to 5 तक के वो स्टैंडर्ड में जाएगा। यहाँ से एग्जाम उसका स्टार्ट हो जाएगा। मिडिल एज फोकस ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग, साइंस, आर्ट, सोशल एक्सपेरिमेंट। वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम एजुकेशन टू लर्निंग एंड एजुकेशन आर वेरी डिफरेंट आपके सेक्टर्स है। आपको यहाँ पे लर्न करना है, आपको एक्टिविटी बेस्ड आपको यहाँ पे सीखना है। और चौथा जो सेकंड स्टेज है, इट इज ए मल्टी डिसिप्लिन, जो सबने अभी कहा कि मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिस्ट रहेगा। मोर फोकस ऑन द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। जो आपके लाइफ स्किल्स है, जो आपके स्टूडेंट में होना चाहिए। हमारे नांदेड़ के जो वाइस चांसलर के एक सेमिनार में जाने का मुझे अवसर हुआ था। उन्होंने कहा था कि भाई अगर एक ग्रेजुएट है, एक एमए बीए करके जो इंग्लिश लिटरेचर से आ रहा है, अगर उससे कहते हैं कि एक ड्राफ्ट करो, आप एक किसी पे रिपोर्ट आप लिखिए, तो अनेबल टू राइट द रिपोर्ट ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। हमारा स्किल क्या है? वी आर ओनली टेकिंग द डिग्री, वी आर नॉट टेकिंग द स्किल्स। स्किल बेस्ड एजुकेशन पे इस पे बहुत ज्यादा फोकस दिया गया। 5+3+3+4, 5 means is a foundation, 3 years means in the preparatory, 3 years in the middle and 4 is in the secondary। and इसमें आपका जो है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस चीज के बारे में दिया उन्होंने। अब इसमें जो अभी ये जो न्यू पॉलिसी है, तो न्यू पॉलिसी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वोकेशनल एजुकेशन को।
स्किल को दिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्किल इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द नेशन। स्किल देश को ड्राइव करते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकल देखें, हमने डेटा देखे, तो हमारे देश में इतनी यंग आबादी होने के बाद वी हैव ओनली 5% ऑफ द स्किल एज कंपेयर टू योर आवर अदर कंट्री। जो स्किल हमारे पास अभी अवेलेबल है ओनली 5% स्किल है, जबकि इसमें जो यूएसए में जो 52% है, जर्मनी में 75% है, साउथ कोरिया में जो स्किल है इट इज मोर देन 95%। स्किल गैप को मिनिमाइज करने के लिए हमने यहाँ पे किया। सेकंड, जो ये न्यू जो पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल अभी आप पॉली के स्टूडेंट है, पॉली का एक स्टूडेंट है, अगर पॉली का स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर पास करता है, सेकंड ईयर पास करता है और थर्ड ईयर पास नहीं कर पाता है, गवर्नमेंट के निगाह में वो स्टूडेंट जीरो है। लेकिन ये सिस्टम के आ जाने से अगर आप एक ईयर पास करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, सेकंड ईयर आप पास करते हैं तो आपको दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ से आप जो है, अगर कोई स्टूडेंट है उसने पॉलिटेक्निक के 2 साल कंप्लीट किया है और वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर वो एजुकेशन कर नहीं पाता, वो कहीं कंपनी में जाता है, 2 साल वर्क करता है, वापस आता है, उसके पास अगर पैसों का बंदोबस्त होता है, अगर वो डबल से रिज्वाइन करना चाहता है तो वो डायरेक्ट तीसरे स्टेज पे आएगा और अपना एजुकेशन मुकम्मल करेगा। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिस्ट जो है इस एजुकेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, और इस एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। जो हमारी पहली जो पॉलिसी थी उस पीरियड में हमको जो एक क्राफ्ट वर्क होता था, एक बेसिक वर्क होता था, स्कूल वर्क होता था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये आवश्यकता हुई कि हमारे बच्चों को बेसिक चाहिए, प्लम्बिंग के स्किल आना चाहिए, वेल्डिंग के स्किल आना चाहिए, जो इलेक्ट्रिशियन के स्किल आना चाहिए। तो ये स्किल को हमको वोकेशनल एजुकेशन, जो हमारा आज का जो रेट है, वी हैव ओनली 5% ऑफ द मार्केटेबल स्किल एज कंपेयर टू अवर अमेरिका, एज कंपेयर टू जर्मनी एंड जापान, जहाँ पे 95% स्किल्स है, जबकि हमारे कंट्री में यंग पॉपुलेशन बहुत। इस चीज को हमको फोकस करने के लिए ये जो पॉलिसी बनी में वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकेशनल एजुकेशन जो आपकी एंट्री है, और बहुत इसमें एक पॉलिसी थी, इसमें एक चीज थी कि हमारे पास जो है, अभी मैं आपको एक महाराष्ट्र की बात बोलता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर एक MSBT बोर्ड है, एक बोर्ड है, और विद्यापीठ के कोई कोर्सेस है। अगर कोई बच्चा वहां से वेल्डिंग करता है 1 साल का, अगर वो वेल्डिंग करता है MSBT से, अगर वो वेल्डिंग करता है बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन से, और ये अगर वो वेल्डिंग का कोर्स करता है 1 साल का विद्यापीठ से, इनकी कहीं भी जो इनकी इक्वलेंसी थी, ये कहीं भी इक्वलेंसी उनकी नहीं थी। अगर वो 1 साल का कोर्स करता है, उसके आगे अगर उसको कहीं हायर एजुकेशन को जाना है, वर्टिकल उसको करना है मोबिलिटी, तो देयर इज नो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि उसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट नहीं था। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो एक स्किल क्वालिफिकेशन का फ्रेमवर्क लाया, और उन्होंने इसको क्या किया कि आपका जो भी कोर्स करते हैं, जैसा आप 1 साल कोर्स करते हैं, 1 साल का आपको एक लेवल आप पार करते हैं। गवर्नमेंट ने इसमें 10 लेवल उसने यहाँ पे बनाया है, लेवल 1 to लेवल 10। लेवल 1 जो होगा इट इज द बेसिक लेवल, और लेवल 10 होगा, ये होगा आपका PhD लेवल। तो आपका जो 10th के पास बच्चा जब जाएगा, यानी 10th जब हो जाएगा, तो उसमें वो लेवल 1 में रहेगा। हमारे जैसे ITI के जो कोर्स होते हैं, हमारे 1 साल के कोर्स होते हैं, उसको गवर्नमेंट ने लेवल 4 में रखा है, और 2 साल जो कोर्स है उसको लेवल 5 में रखा है। डिप्लोमा इंजीनियर को लेवल 6 में रखा है, पोस्ट डिप्लोमा को लेवल 7 में है, डिग्री आपका 8 में है, PG आपका 9 में है, और 10वां जो लेवल है NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, आपका जो PhD है वो लेवल आपका 10 में है। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिस्टमेंट, आपने कोई भी लेवल पास किया, अगर आप फ्यूचर में आना चाहते हैं तो आप उस लेवल से आप एंट्री करके आगे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप पूरी करने की आपको उसमें चांसेस है। तो ये जो आपने कहा, सर ने कहा कि ये जो पॉलिसी है बहुत डायनामिक है, बहुत वाइब्रेंट पॉलिसी है, और इस पॉलिसी के लिए हर टीचर को, हर जो मेंटर है, हर जो इस टीचिंग फील्ड में उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो ये अभी का आज का जो मेरा जो वेबिनार जो मुझे प्रोफेसर मारूफ सर ने जो मुझे दिया था, एक टॉपिक मुझे दिया,
और आपके साथ आने के बाद मुझे पता चला कि हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस विजन पॉलिसीज। मुझे खुद इसमें आने के बाद मुझे बहुत सीखने मिला। तो आई थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी द टाइम टू बी द पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। और नेक्स्ट जो आपके जो है जो ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी आगे की प्रोसेस आप पूरी कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. आवाज आ रही है मैम? हेलो? Hello, Awaz. Yes, yes, sir. Yes. Now we will move towards question answer session. I would like to invite Professor Bandanawa sir and Professor Muhammad Maruf sir to begin the question answer session. Sir, one question is that. Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, sir. There are comments. Many people they are writing very nice explanation, very good explanation like that. One question has been asked by one of the participants. His name is Sahil Khan. He is asking when will this policy will be implemented, or it already is implemented. One of the question is there in the chat box. Yes. Yes, sir. The question is when will be this policy implemented, Yes. or already it is being in the implementation process. Okay, but due to this COVID situation in our country, it may be possible to 2022 to 20 possible as per my webinar and as per my meeting when I was in the part of that meeting, maybe due to situations 2022 से 23 तक हो जाएंगे इम्प्लीमेंट ये। जी सर जी। There are no other questions. From Zoom participants, they can ask the questions if they are having any questions. Okay, sir. Samri ma'am, there are no other questions. Only one question was there. If any other participants from Zoom, they can ask questions. Yeah, there are many people. Bandanawas. Yes, sir. Let this screen be closed. Yes, sir. Quadri sir, I think Quadri sir need to close the screen. Stop. Quadri sir, stop screen sharing. Okay, sir. Okay. Thank you, Professor Quadri sir. Samri ma'am, one more question is there from this chat box. Okay. Yes. Will it make 12th compulsory for polytechnic? One question is from this Zoom participant. Will it make 12th compulsory for polytechnic? Sir, they have as per the National Skill Qualification Framework के हिसाब से उन्होंने फर्स्ट से 10 लेवल बनाए हैं। उन्होंने जो पहला लेवल दिया लेवल फर्स्ट और लास्ट का दिया पीएचडी। उन्होंने पॉलिटेक्निक जो दिया वो 12 पास जो स्टूडेंट है ही इज इन लेवल सेकंड और थर्ड। इफ ही इज 12 पास ही इन लेवल थर्ड। पॉलिटेक्निक का जो लेवल दिया है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में ही इज इन लेवल 6। ओके। अगर वो अगर सर कंटिन्यू सर। अगर कोई स्टूडेंट सर 12 पास करता है और 12 पास करने के बाद उसका लेवल 3 आ जाएगा। अभी आपके आगे चल के जो नई पॉलिसी में है तो नई पॉलिसी में जो क्वालिफिकेशन बीए बीकॉम बीएससी नहीं आएगा, आपका लेवल आएगा वेल्डिंग लेवल 3 means he is undergo of training of 2 years after 10. 6 means he completed the training of means after 10 he is completed 3 training in the welding or welding technology
or mechanical engineering. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. I think Nafil sir, And your question is answered. Bandana was one more point here everybody has to understand. Ji, sir. I think in the slide, what was shown, that 5 plus 3 plus 3 plus 4 model. Ji, sir. So that will give a lot of flexibility. So once you complete the foundation years, 5 years, then 3 plus 3. So you complete 11 years. It is as good as after 11th, you are entering into a degree program. Now the degree program is for 4 years. So the last 4 years, in that 4 years, depending on your level, where you go. For example, if you are able to complete only 1 year, then today what happens if you do not complete 3 years or 4 years of degree program, or in case of architecture or medicine 5 years. So what happens? They are treated to be dropouts. It is like incompletion of degree. So here in this policy, if you complete 1 year out of those 4 years as a part of degree, then you are awarded certificate level, certification rather from the concerned university. Yes. Or if you complete 2 years, you will be getting a diploma certification. Yes. And if you complete 3 years, you will get a normal degree in that defined, specialization with all the subjects or credits, whatever you gain. But when you complete 4 years degree, it is called integrated degree, which is based on a research component. So therefore, the levels are defined in those 4 years too also. And still it is a policy document. Now here the lot of its rules, implementation strategies, how it goes in terms of technical education, professional education, all that matters. But the common emphasis is what? Our campuses are to be multidisciplinary campuses, where a student should be having flexibility to take any of the credit, any of the course. For example, now our technical campus. So there, if somebody is joining for that 4-year degree program, then that student will have flexibility in opting courses from architecture, from humanities, from arts, from management. The campuses should be providing all this mix of, mixed bag of the courses. So idea is a graduate, a degree holder or a diploma holder or a certificate holder should not be restricted to a particular skill. He should be getting multiple skills. That is the whole idea of this NEP 2020. So therefore, even we all need to focus on converting our existing campuses into multidisciplinary campuses. Now, luckily, what has happened today, for example, in Kalsekar Technical Campus, we have got both polytechnic, architecture, pharmacy, engineering, and many branches of engineering. Now, already it is like a multidisciplinary campus. Now, to this, we need to add other things. For example, let us say a civil engineering student or a mechanical engineering student would like to do something related to management, or something related to some humanities or fine arts, or somebody having certain special interest of, say, music, right? So the music can be one of the facility which we need to provide. So that course will add value to that particular degree program. So this way, what happens, everybody will be having a lot of flexibility to scale their skills. So they are not restricted with a particular specialized degree program also, but they will be more like multidisciplinary, candidates, and they can keep developing these, skills at any level. Okay, for convenience of providing these credits in that academic credit bank, so they will have certain levels defined, and there is a gradation, and they will define how many credits we have developed, and those credits will define to enter at a different levels. Suppose
I stop at 1 year of my degree program. Then I would like to join after 5 years. Then at that point of time, whatever credits I have got, they will be accounted to continue my further studies. So there is nothing like dropout system in this new education policy, which is most beautiful thing which we all need to explore. So therefore I said, of course, I thank Quadri Sahab. The purpose of this webinar was only to create awareness. It is as good as telling you what is all NEP 2020, why it came into existence, and why we still don't keep modifying it, but why there was a need to complete, rather a paradigm shift to be taken as a policy at national level. So that is simply because the time has changed, as he rightly pointed out. The time is related to knowledge era. Even coming days, it is all ruled by the brain. It is a brain era. So therefore, if we don't focus now, keeping next 20 years as our vision. For example, when I say 5 plus 3 plus 3 plus 4, when you count how many years? Only about 15 years. Yes. So therefore, from 2020 to 2035. So in next 15 years, the cycle of this policy will be maturing. So the maturity of this policy will be seen in 2035. But it doesn't mean that we should go in. Thank you, sir. Thank you, Vedant. Thank you. So can we end the session, sir?